Hello guys, I Ashi from LU Update. For today, our topic is bank and functions of bank. First, we have to understand what is bank. As we all know that bank is a financial institute that accept the deposits from the public for the purpose of lending the money, or for the purpose of investing them to earn the profit. And they provide the facilities of withdrawing the money through the checks, draft orders, etc. With the help of these, we can withdraw the money from our accounts. Okay, and then there's the functions of the bank. Basically, there are two functions of the bank, that is the primary functions and secondary functions. Primary functions are subdivided into two, that is accepting the deposits and granting the advance. And secondary functions are also subdivided into two, that is agency functions, and second is general utility functions. फर्स्ट क्या होता है कि प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस आर दोज फंक्शन इन विच द पब्लिक कैन deposit their money and withdraw and can take the loan from the banks. Okay, first function is accepting the deposits. Is the most important functions of the commercial bank. In this, इसमें क्या होता है कि a depositor can deposits their money in the bank because they having a surplus, the customer having a surplus funds with them, so they like to deposit them in a commercial bank for earning the interest. Okay, so bank जो होता है, bank can accept their deposits basically in a three types के accounts होते हैं through which the bank can accept the deposits from the depositors. फर्स्ट कौन सा अकाउंट होता है, दैट इज अ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या होता है, आर दोज डिपॉजिट्स दैट आर पेएबल ऑन द डिमांड. These deposits are payable on the demand. When the depositor demanded for their money, then the bank will pay them. Okay, that's why इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिमांड डिपॉजिट्स भी इसको बोलते हैं. डिमांड डिपॉजिट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिमांड पे जो डिपॉजिटर होते हैं उनकी डिमांड पे क्या होता है, ये पेबल हो जाता है. ओके, एंड इन दिस क्या होता है कि मनी फॉर दिस डिपॉजिट्स can be withdraw with the help of a check, without any restrictions. इसमें क्या होता है कि कोई restrictions नहीं होता on the amount of a withdrawal by the depositors. Okay, and these accounts are probably mostly held by the traders or the businessman who uses these accounts for the purpose of making the business payment. Okay, these are used by the traders or the businessman. Okay, and then there is a second account is a saving account deposits क्या होते हैं, is also called as a payable demand. बट इसमें क्या होता है कि मनी आर विदड्रॉ बाय द चेक, बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द डिपॉजिटर्स ऑफ दिस अकाउंट. इसमें क्या होता है कि बैंक क्या करती है, एक सर्टेन लिमिट इम्पोज सर्टेन एक लिमिट कर देती है कि द डिपॉजिटर कैन विदड्रॉ दैट नंबर ऑफ द अमाउंट फ्रॉम देयर अकाउंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम में. ओके, and these accounts are preferred or used by the households because household क्या करते हैं, they having a savings, so they can deposit in the bank and earn a interest income from these deposit, from these savings के through वो क्या कर सकते हैं, interest income earn कर सकते हैं. Okay, and in this the deposits in this account can earn a interest at a nominal rate पे interest earned करती है. Okay, and then there is a fixed deposits account. Fixed deposits account क्या होते हैं कि in this money क्या होता है, money as with the name it is cleared
दैट फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम द अमाउंट इज डिपॉजिट इन द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम सच एज फॉर अ 1 year, फॉर 6 months, फॉर 2 year, फॉर 3 years, फॉर 5 year, एक्सेट्रा. ओके, इसमें क्या होता है, लेकिन दीज डिपॉजिट्स आर नॉट पेबल ऑन द डिमांड because it's for a certain period. It has a limitation that it will be deposits for a certain limit तक ही deposit दे सकता. So these types of account, so this type of amount in this account in this deposits में क्या होता है कि not payable on the demands में नहीं payable होते हैं. So and in this they do not enjoy the check facilities, भी उनको नहीं मिलती है. That is, it means that checks cannot be issued against them for paying the payment. Okay, और इसको क्या कहते हैं, these deposits are also known termed as a timed deposits because since the deposits are made for a fixed period of a time and cannot be withdrawn before the maturity period. से पहले हम लोग निकाल नहीं सकते हैं पैसे को. So these types of fixed deposit, these types of account is for a fixed period. Okay, and in this the interest is earned on these deposits is higher than the saving accounts. Okay, and then there's a recurring account. Recurring account is a one type of the fixed deposits होता है. इसमें क्या होता है कि in this case क्या होता है, depositor make a regular payment on a given sum. They make a regular payment such as, for example, we can take a person or a customer can deposits are 2000 rupees per month for a specific period such as for 2 years or 3 years. They regularly every month they pay 2000 rupees in the bank. दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल सेवर्स होते हैं उनको मोटिवेट कर सकें कि वो क्या करें कि अपना सेविंग्स को डिपॉजिट्स करें इन द बैंक एंड कैन अर्न इंटरेस्ट फॉर देम. ओके, एंड देन देयर इज अ सेकंड फंक्शन इज अ गारंटी advancings of loan. The second primary functions of the commercial bank is to extend the loan and advances to their customers, to the people, to the public. Okay, and through which they can earn the profit. अर्न द प्रॉफिट कैसे वो अर्न करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग रेट और द डिपॉजिट रेट्स में जो डिफरेंस आता है उससे क्या होता है, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं. सो क्या होता है, दे मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस. ओके, सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं एडवांसिंग ऑफ द लोन. फर्स्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म लोन बैंक जो होता है, बैंक्स प्रोवाइड्स दी शॉर्ट टर्म लोन फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए प्रोवाइड करती है. इसमें क्या होता है, इन दिस केस द एंटायर अमाउंट ऑफ द लोन सैंक्शन इज क्रेडिटेड टू द बोरोवर करेंट अकाउंट. इसमें क्या होता है कि जो बोरोवर होता है हु आर इन द नीड्स ऑफ द मनी can gets the amount of the loan that he wants in the current account. There is a no specific account made in the short term loan mein. They gets the loan in their current account. Okay, and the borrower has to pay the interest on the entire amount he borrowed from the bank. Okay, interest उसको जितना सिर्फ उसने borrowed किया amount from the bank, that much on that he has to only pay the interest to the bank. Okay, and then second is a cash credit. Cash credit क्या होता है, cash credit is another type of the advancing loan to the customer, to the public. In this, the entire sanction amount of a loan by the bank is not given to the borrower at a particular time. इसमें क्या, इन दिस द बैंक ओपन एन अकाउंट. इसमें क्या होता है, एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है ऑन द नेम ऑफ द बोरोवर एंड अलाउ हिम और हर टू विदड्रॉ द बोरोड अमाउंट एज एंड व्हेन ही रिक्वायर्ड द मनी. ओके, एंड इसमें क्या होता है, बैंक चार्जेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट ऑन द अमाउंट that is sanctioned by the borrower,
बट ऑन द एक्चुअल ही विड्रॉड, एक्चुअल अमाउंट पे क्या करता है कि इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट इज विड्रॉन बाय द बैंक. ओके, so as we and this cash credit is most popular with the Indian bankers, businessman के लिए most preferable और popular है. Okay, and then there is a third is a overdraft facility. Overdraft facility, with the name it's clear that over मतलब जितना बैंक में अकाउंट में पैसा उससे ज़्यादा निकालना है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैंक क्या करती है, फैसिलिटीज हम लोग को प्रोवाइड करती है. बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी टू देयर कस्टमर्स टू विड्रॉ, to over withdraw the amount from their accounts. In this, when a customer gets an overdraft facility from the bank, this means that he is allowed to withdraw the money through with the checks in excess of the balance standing to his credit to the extent of the amount of overdraft facilities. Okay, he can withdraw the money from the bank in a overdraft, in a over. And then there is a discounting of bills. Discounting of bills क्या होता है? Discounting of bills of exchange means in this the bank can advances money by discounting or purchasing the bills of exchange, both domestic bills और foreign bills. इसमें क्या करती है कि बैंक पे दी बिल अमाउंट टू द ड्रॉवर. देयर आर टू पार्टी, दैट इज अ ड्रॉवर एंड ड्रॉई. ड्रॉवर आर द पर्सन्स हु मेक्स द बिल्स और द चेक, एंड ड्रॉई हु एक्सेप्ट्स दैट बिल और द चेक. ओके, सो इसमें क्या होता है कि बैंक जो होती है वो अमाउंट क्या करती है, ड्रॉवर को पे करती है बाय डिडक्टिंग दी क्या करती है, डिडक्ट क्या करती है, डिस्काउंट और कमीशन को डिडक्ट करने के बाद वो ड्रॉवर को पे आउट कर देती है. एंड ड्रॉवर को पे आउट कर देती है. एंड ऑन द मेच्योरिटी पे क्या होता है, जब उसकी मेच्योरिटी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो क्या होता है कि द बिल्स प्रेजेंटेड टू ड्रॉई इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ द बिल्स एंड अमाउंट इज कलेक्टेड. Okay, amount is collected by the Troy. Okay, and then there is a secondary functions. Secondary functions में क्या होता है, that is a agency functions. Agency functions में क्या होता है, पहला कि first is that agency functions क्या होते हैं कि बैंक provide the agency functions for their customers. The bank charges a commission or services charges for such functions. Commission charge करती है for providing these types of फंक्शंस. जैसे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक क्या करती है, कलेक्ट करती है. कमर्शियल बैंक कैन कलेक्ट द फंड थ्रू द चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, on the behalf of the customer, and so they charges a commission for their services, for this services. And second agency function is that they also they make and collect various types of a payment on the behalf of their customer, जैसे सच एज टैक्सेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एक्सेट्रा. ओके, एंड थर्ड एजेंसी फंक्शन इज दैट इट्स पेमेंट थ्रू द चेक्स. बैंक क्या करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है टू पे द अमाउंट ऑफ अ मनी विद द हेल्प ऑफ अ चेक्स. क्या होता है, बैंक हैज प्रोवाइडेड अ वेरी कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ चेक्स. The check is a principal method of paying the payment of the money in a business in a recent year, and it was a cheaper and safer means of making the payment from one to the another. Okay, second agency function is that a transfer of the fund. Bank also help in transferring the funds from one bank to the another, and it is a safe and it is less time consuming. Okay, with the help of जैसे क्या होता है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड, लाइक चेक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, मेल ट्रांसफ़र हो गया, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं. और थ्रू आजकल तो हम लोग मोबाइल्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी. ओके,
And then there is a second is a general utility function. जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में क्या होता है कि बैंक्स हम लोग को क्या प्रोवाइड करती है कि जैसे हम लोग को सेफ लॉकर प्रोवाइड करती है, लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. इसमें क्या होता है कि बैंक प्रोवाइड्स अ लॉकर फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर फॉर सेफ कस्टडी के लिए, फॉर देयर वेरेबल डॉक्यूमेंट्स लाइक गोल्ड, वेरेबल गोल्ड्स हो गया, अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन सब के लिए सेफ लॉकर प्रोवाइड करती है. So their documents and ointments can be saved in the bank. Okay, and then there is a second general utility function is that it also bank also issue the draft for transferring the money from one bank to the another bank, and it also issues the letter of credit. लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू करती है स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, एंड द थर्ड इज दैट इन लास्ट general utility function is that the bank also provide a underwriting of the shares debenture through its merchant banking divisions. Okay, and say then there is a difference between a loan and advances. What is the difference between a loans and advances? First, a loan is provided for a longer period of a time. Okay, whereas advances provided for shorter period of a time. Okay, loan is a secured in nature, whereas advances is unsecured. Okay, and the rate of interest has to be paid on the sanctioned interest असेट्स पे पे आउट करना पड़ता है. वेयर एज इन एडवांसेस में क्या होता है कि ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द विड्रॉवल अमाउंट पे ही सिर्फ पे आउट करना पड़ता है. ओके, एंड देन देयर इज द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Reserve Bank of India established this was an epic institution that was established on 1st April 1935 में. Okay, but it's established on 1st April 1935, and there was a maximum capital that was is a 5 crore rupees. Okay, and their headquarter is in Mumbai, as we all know. And the present governor of the RBI is Shri Shaktikant Das, was a present governor of India for a 3 years tenure, and deputy minister is Dr. M.D. Patra. Okay, and then in the exams there is a question that who is the first governor. First governor is Osborne Smith, was a first governor in 1935 to 1937 तक ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI रहे थे. एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था? C.D. Deshmukh was the first Indian governor for the period of from the period 1943 to 1949 तक वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे ऑफ द RBI के. ओके, and then there is a functions of the RBI. What are the functions of RBI? Basically there is a issuer of currency. As we all know that bank the RBI have the right to issue the currency. They have a monopoly of the note issuing. Okay, they issue they have a right to print the note currency in the market. ठीक है, so central bank is the bank of a issue. It's enjoy the monopoly of the note issuing currency. Notes and the coins issued by the central bank are the legal tender. Okay, and second functions of the RBI is that it's act as a banker to bank. As we all know that central bank has some relationships with the commercial bank as a latter has with the general public. As we all know that as the central bank act as a banker to the bank, because it provides several functions, facilities to the consumer, to the commercial banks, to other banks,
such as they provide the credit mainly for a shorter period of a time to the commercial bank, and it's also provide the guideline, directions, regulation through which their activity can through which they can perform their activities. Okay. And then there's a third function is that it act as a controller of a credit. As we all know that central bank has a power to control the credit in the economy. They can control the credit in the economy, and the most important functions of the central bank is to control the credit creation by the commercial bank. Okay, they have adopted the methods to control the credit in the economy, like qualitative and quantitative method. Qualitative method through the bank rate, through the open market securities, regulating the customers credit customers, rationing credit rationing के थ्रू ये क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकती है करेंसी को इन द इकोनॉमी में. ओके. And then there is a function is a custodial of a foreign reserves or bankers to government. इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट फंक्शन इज दैट बैंक जो सेंट्रल बैंक होती है एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. द सेंट्रल बैंक हैज़ अ पावर हैव परफॉर्म द सेवरल functions as they performed by the commercial bank to their customers. The central bank received the deposits of the cash, check, draft, etc. from the government. Okay, and the government and the central bank provide the cash to the government, and government क्या करती है, वो पे करती है salaries, wages and other cash to the publics. Okay, and then there is a last. Central bank act as a lender of a last resort. As we all know that the central bank also act as a lender of a last resort, means that when the commercial bank exhausted their resources. Okay, and क्या होता है कि they are in the needs of the money or in the need of the fund, the approaches to the central bank for tie over the financial crisis that are faced by the commercial banks. So क्या होता है कि central bank जो होता है वो last resort होता है, lender of the last resort. They faces all the financial crisis that are faced by the commercial bank if they are unable to meet with these crises. Okay, and then क्या है लास्ट हम लोग का क्या है कि सेंट्रल बैंक का ओवर फंक्शंस हो गया. एंड क्या होता है कि लोगो ऑफ द सेंट्रल बैंक, देखो क्या होता है लोगो ऑफ द आरबीआई क्या है कि ऑन दी बैक साइड ऑफ द नोट में क्या है, पार्लियामेंट है ऑन दी ₹50 के रुपीज़ पे, और इकोलॉजिकल सिस्टम कौन से नोट के 100 रुपये. and a number of a language that are used on the note is 17 languages क्या होती हैं, used होती हैं नोट पे. और क्या होता है कि नंबर ऑफ द लैंग्वेजेस ऑन अ नोट पैनल्स पे कितने होते हैं, 15 लैंग्वेजेस होती हैं. ओके, ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and press a thumb button, share it, comment it. Okay, thank you, bye.